Hello everyone. So I was doing the prefix sum questions. Yesterday I did this maximum product sub array question and इसमें solution तो submit हो गया था but I thought कि I will check what are the possible solutions for this. Let's see this one, 3 solutions. So first is intuition. Since we have find the contiguous array having maximum product, then your approach should be combination of following 3 cases. All the elements are positive. This is the same thing which I did, but they have written a really good code for this. For each index, I keep updating the max and min. Okay, they're taking a max and a min and an answer. If we are also keeping min, because on multiplying with a negative, your min will become max and max will become min. So for every index we will be taking max of, okay, makes sense. Approach 2 is just the slight modification of previous approach, as we know that on multiplying with negative numbers maximum will become min and min will become max. So why not as soon as we encounter negative element we swap the max and min. Okay, and third is two pointer approach. Through intuition explanation, we know that if all the elements are positive or negative elements are even, then your answer will be the product of complete array, which you will get in variable L and R at the last iteration. But if the negative elements are odd, then you have to remove one negative element, and it is sure that it will be either right of the max prefix or left of the max suffix product. So you need not to modify anything in your code, as you are getting prefix product in L and prefix product in R. If array also contains 0, then your L and R will become 0 at that point, and then just update it to 1. Okay, let's check the next question then. Next question is number of ways to split array. You are given a 0 indexed integer array nums of length n. Nums contain a valid split at index I if the following are true. The sum of the first I plus 1 elements is greater than or equal to the sum of last n minus I minus 1 elements. And there is at least one element to the right of I, that is, okay, right में at least एक element होना चाहिए, and return the number of valid splits in nums. So if this is the array, the splits are I is true if sum of first I plus 1 element is greater than, so if I is 0, sum of first I plus 1 element, so 0 plus 1. So first element, and then n is 4 minus 0 minus 1, so 3, last 3 elements and first element. This will be the first split, 4 minus 8 and 7. Then the second split will be at this index, so 10, 4, and the other part will be minus 8 and 7. The third split will be 10, 4 and minus 8, and other half is 7. Now in these three there are only 3 splits possible. We cannot keep all of them in left, because they are saying there should be at least one element in the right. Okay, so in the first split, this is valid or not. The sum of these is 4 plus minus 1. 4 minus 1 is 3, so 10 and 3.
10 and 3, so this side is greater than this, greater than or equal to, only greater na, is greater than or equal to. Okay, so this is valid. The second one is again valid because this is 14 and this is -1, so this is also valid. The third one is 8 10 minus 8 is 2, 2 plus 4 is 6, so this is invalid because 6 and 7, this side is smaller, so this is invalid. So there are only 2 valid cases. I got the point. Okay, so the brute force approach of this will be that for each iteration we find the sum of all the left elements and right elements. So let's say we say that I is 0, so we will find the sum till 0th index and sum of all the rest of the elements, and then we can sum of all the left elements and then sum of all the right elements we find, and then we will check if the right side is left side is greater, then that will be the result. So in this case the time complexity will be order of n square, because first of all we are doing 0 I is less than nums dot length I plus plus, and then we will find the sum of all the elements till I. So int sum left equals to 0 initially. Now for int j equals to 0, j is less than equals to I j plus plus, and sum left equals to nums j. ठीक है, तो ये हो गया सारे एलिमेंट्स का लेफ्ट वालों का सम. देन वी हैव टू फाइंड सम राइट, सो इंट सम राइट इक्वल्स टू 0, एंड दिस विल बी फॉर इंट j इक्वल्स टू I plus 1, j is less than n j plus plus. And are we going to run this till the last element? No, right? We'll run this only till here. We don't want to include the last element. If j is this element, then j will run from 0 to this element, which is not correct. So this will run from this till n minus 1. Okay. Now j will run from I plus 1 to last element. This will run till last element, and sum right will become sum right plus, or we can write plus equals to nums j. This will be also plus equals to nums j. Now this is done. We have found the sum of left elements till this index and sum of all the right elements, and then we can simply check if sum left is greater than equals to sum right. In that case, that means the result we have got a valid split, and we take a int result equals to 0 initially, and then we can return result. Fine. So this is one way of doing this. This is the brute force approach. In this, the time complexity is n square because we are running from this is running n and this is also running till n in worst case. Right. What else we can do is the other way of doing this would be that we take two separate arrays and a left sum array and a right sum array, and we store the sum in both the arrays. So let's suppose when this is the array, we'll take two arrays, left sum, this is a array, okay, and a right sum array.
In left sum array also, in left sum array will keep track of all the sum of elements from left side. So 10, then 14, then 14 minus 8 is 14 minus 8 क्या होता है, 12, 13, 14, 6, and then 6 plus 7 is 13. So this will be left sum. Now we will calculate the right sum. Right sum is adding the numbers from the end. So it will be 7, last element, then 7 plus minus 8 minus 1, then minus 1 plus 4 is 3, then 3 plus 10 is 13. Okay, this is right sum. Now what we need to do is at each index we can check if 10 is what? 10 is the sum of 10, but 13 is the sum of all the elements. But we don't want that, we want this. So we need to compare 10 with 3. Next element, we need to compare 14 with minus 1, and then we need to compare 6 with 7. Right? These 3 needs to be compared with these 3, and whichever is greater, that will be the valid split. So 10 is basically sum of this element, right? This element needs to be compared with some of these, and what is sum of these? This element. Then sum of these two is here, that needs to be compared with sum of these two, which is here. So basically I needs to be compared with j plus 1th or I plus 1th element of right sum, and we can compare it till n minus 1th element, and this will be compared with nth element, and that will give us the result. This is also a good solution. The time complexity will be order of n, but it is going to take extra space. We are taking 2 extra arrays, so space complexity is order of 2n. Now I'm thinking, can we do it without taking an extra space? So let's say what we'll do, we'll keep first of all we add all the numbers. Okay, we add all the numbers. What will be the result? Once we add all the numbers, it will be 10 plus 14, 14 minus 8 is 6, and 6 plus 7 is 13. So total sum is 13, right? Now from the first index we'll take current sum. Total sum is, this is the current sum. Now at the first index we need to find the sum of all the left and sum of this. So for that we need to subtract. To find, we need two sums. We need left sum, which will be 10. Initially let's say left sum is 0 and right sum is 13. Okay, right sum is 13. Now when we are at this index, we need to, what we need to compare? We need to compare this with this. How we will calculate? So left sum will become left sum plus num psi, and right sum will become right sum plus minus num psi. Right, 13 minus this element, so minus num psi. Okay, so we have got left sum as, so in the second iteration left sum will become 10, left sum will become 10, and right sum will become 13 minus 10, so 3. Now we will compare if 10 is greater than 3. It is greater, so it is a valid split. 10 and this is a valid split. Now in next iteration again this formula will apply for 4. So left sum will become 10 plus 4, 14. Right sum will become 3 minus 4, so minus 1. This is also a valid split. Then minus 8. Left sum will become 14 minus 8. 14 plus minus 8. So left sum will become 6. And right sum will become minus 1 minus 7.
right? Wait. Right sum will become -1 minus 8 minus 8. You get my point. We need to subtract. So -1 minus 8. So it will become 7. Now this is not a valid split. We checked it for 8. Then shall we check for 7? No. We just need to check it till here. Okay. So now we can write it. This for loop is correct. We'll keep both the left sum and right sum outside. Left sum, right sum. Now let's calculate a total sum. Let's call it right sum only. So for int I equals to 0, I is less than nums dot length I plus plus, and we'll calculate sum right plus equals to nums I. So we have calculated the sum of the whole array. Now from next iteration in this one, for the 0th index, sum left will become plus equals to nums I, and sum right will become minus equals to nums I, and then we just need to compare. If sum left is greater than equals to sum right, then this is a correct valid split, और फिर हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे. आई थिंक दिस इज गुड. लेट मी ट्राई टू रन दिस. Let me see if it will work if there are only 2 elements. Submit. And what if this is like this? And is it possible there is only one element? No, right? 2 and 10 to the power 5. One more thing I'm thinking is that, is it possible that sum will be outside integer, because we are adding all the numbers? So what if sum will go outside the range? Let me try to submit it. We'll see. They haven't mentioned anything about that. Wrong answer. There are all the negative numbers, is it? From 0 till something. Let's try to see. This is fine. Okay, let me there are a lot of numbers. I think the issue is that only the integer thing could be could be flowing outside the integer range. This is basically all the numbers from 0 to 999. This guy, sum of all the numbers from 0 to this number. It is this. अच्छा, sum of all the numbers is this ना, तो ये obviously outside the range है. आउटसाइड द रेंज ही है, ये इंट में नहीं आएगा ये. तो इसको हम लॉन्ग ले लें. आई डोंट नो लॉन्ग में भी आएगा कि नहीं. सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 टू, कितना बड़ा नंबर है ये? बहुत ही बड़ा है.
व्हाट विल बी, क्या लिखूँ, लॉन्ग का मैक्स ना, मैक्स वैल्यू ऑफ लॉन्ग या अच्छा लॉन्ग बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है, ठीक है ठीक है, तो इसको लॉन्ग ही लेते हैं। ओके ओके, दिस इज डन। I'll check the next question, but probably we'll do it tomorrow. Okay, this is a matrix question. Given a 2D matrix, handle multiple queries of following type. Calculate the sum of elements in matrix inside the rectangle defined by its upper left corner and lower right corner. Upper left corner, lower right corner से एक वो बनाया है इन्होंने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर नहीं ना, रेक्टेंगल बनाया। इम्प्लीमेंट द नम मैट्रिक्स क्लास, नम मैट्रिक्स क्लास को इम्प्लीमेंट करना है इन सच अ वे दैट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विथ इंटीजर मैट्रिक्स मैट्रिक्स। Returns the sum of elements of matrix inside the rectangle defined by its upper। अच्छा, तो जो भी हम क्वेरी में आएगा उसका हमें जैसे ये क्वेरी है तो उसका हमें सम लेना है, उस रेक्टेंगल का सम बता देना है। You must design an algorithm where some region works in order of 1 time complexity, some region order of 1। तो आई थिंक ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सम ऑलरेडी स्टोर्ड हो कहीं पे इस वाले के थ्रू। जैसे ही हम इनिशियलाइज़ करें हमें हर एक बॉक्स का सम पता हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि पूरा जो चीज़ है उसका सम हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और अच्छा समझ गई मैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे ना कि जैसे 3 है तो अगर इसी बॉक्स का सम है तो 3 है, अगर 6 तक का सम चाहिए हमें तो अगर हमें इन चारों का सम चाहिए तो हम इन चारों को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे हम वो सम स्टोर करेंगे। सिमिलरली अगर हम इस एलिमेंट को लेते हैं तो हम इस एलिमेंट के हिसाब से, अगर यही हमारा वो है लास्ट एलिमेंट है, कॉर्नर है, तो हम इन सब का सम यहाँ पे स्टोर करेंगे। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, इन सब का सम, इन इस पूरे 6 बॉक्स, 6 नहीं है कि जितने भी हैं इन सब का सम यहाँ स्टोर होगा। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, ये पूरे के अंदर जितना कुछ भी होगा उसका सम यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें इस बॉक्स का सम निकालना है तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें तो एक टोटल आ जाएगा। सेकेंड लेट मी थिंक।
तो यहाँ पे हमें अगर ये ब्लू वाले बॉक्स का सम चाहिए तो हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा और इन चारों डब्बों को भी माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर दैट हम इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, और इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे ये पूरा, पर ये 2 बार माइनस हो जाएगा ना, वो कैसे करेंगे हम, ये 2 बार माइनस ना हो। और फिर इस कॉर्नर वाले को ऐड कर देंगे, है ना। अगर ये रेड वाले का चाहिए हमें तो हम यहाँ पे जो लिखा होगा उसमें क्या होगा, इस पूरे का वो ले लेंगे, और फिर 2 पे जो लिखा होगा उसको माइनस करेंगे, ये पूरा माइनस हो जाएगा, और फिर 1 पे जो लिखा होगा उसको माइनस करेंगे, ये पूरा माइनस हो जाएगा। पर इस केस में क्या होगा कि 3 और 5 2 बार माइनस हो जाएंगे। तो फिर इसके अपर कॉर्नर के टॉप पे जो लिखा होगा ना इसको ऐड कर देंगे। आई थिंक आई गेट इट। ठीक है, लेट मी ट्राई टू डू इट राइट अवे. So in this we'll take, we can update the existing matrix as well, that should also work, or we can take a new one. Do we require these values again? No, right? तो क्या करेंगे हम, पहले तो हम सम निकाल लेंगे और स्टोर करेंगे। तो 3 का यही होगा, 5 में ऊपर वाले को ऐड करना है, 0 में इधर वाले को ऐड करना है। 6 क्या होगा, ये 8 प्लस 0 प्लस 6 यहाँ पे रहेगा, है ना। यहाँ क्या होगा, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ओके। तो कोई भी वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, है ना। तो हम क्या करेंगे कि फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I is less than matrix dot length I plus plus, for int j equals to 0. अच्छा, ये मैट्रिक्स हमारी n क्रॉस n की है कि कुछ भी हो सकता है, m और n है। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी स्क्वायर है ना। j is less than, let's take m and n. So int n equals to matrix dot length, int m equals to matrix 0 dot length. अब ये n तक रहेगा, ये m तक रहेगा, एंड j प्लस प्लस। अब हमें ये चेक करना है कि ये कॉर्नर वाले हैं, फिर तो हमको वो इंडेक्सेस मिलेंगे नहीं। तो बट फिर ये मैट्रिक्स यहाँ पे कैसे एक्सेस करूँगी मैं, ये तो दे ही नहीं रहे हैं। तो हमें, मुझे लगता है एक और ऐसे वो रखना पड़ेगा जिसमें हम ये स्टोर कर सकें, अदरवाइज़ तो ये खो ही जाएगा ना। क्या कह रहे हैं, ये ऐसे कॉल हो रहा है तो ये मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ थोड़ी एक्सेस होगी इस वाले में। तो लेट्स टेक अ न्यू, बट फिर इसका साइज़ कैसे पता चलेगा, क्या करूँ। अगर मैं मैट्रिक्स को यहाँ अपडेट करती हूँ तो आर वी गोइंग टू गेट दैट वैल्यू, मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ कहाँ से मिलेगी, यहाँ तो है ही नहीं ना।
अलग से भी बनाएंगे तो फिर इसका साइज़ नहीं पता है, तो लिस्ट टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक ऐसे मैट्रिक्स ले लेते हैं जैसे हमें क्या चाहिए, सम ना, सम मैट्रिक्स का नाम ही सम रख लेते हैं, सम, और इसको डिफाइन बाद में करें, ये कर सकते हैं ना। जैसे ये ले लिया, लेट्स कॉल इट प्राइवेट, ठीक है, और इसको डिफाइन यहाँ कर देते हैं, इसका साइज़, तो सम इक्वल्स टू न्यू इंट, और n और m साइज़ का ये रहेगा। आई थिंक दिस शुड वर्क। अब हम सम को उस मेथड में एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सॉरी, n नहीं होगा, n+1, m+1 ना, इसमें हमको फिर आराम से हम सबको स्टोर भी कर सकते हैं अगर ऐसे ले तो, ना, क्योंकि अगर हम एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो हम उसको स्टोर करने में आसानी रहेगी, एक एक्स्ट्रा लेंथ ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम i+1 और j+1th एलिमेंट क्या हो जाएगा, इधर का सम और ऊपर का और मैट्रिक्स का सम। बट यहाँ पे अगर हम इस एलिमेंट को लेते हैं, मतलब मान लो कि हम 3 को ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका सम लेंगे तो ये इस पूरे का सम होगा, और इसका सम लेंगे तो ये इस पूरे का सम होगा, तो ये तो फिर भी ओवरलैप ही हो रहा है ना, तो वो हमको ये ओवरलैप भी तो माइनस करना पड़ेगा इसको यहाँ से, क्योंकि ये 2 बार आ जाएगा फिर। तो इसमें हम लेंगे सम इस तरफ वाले का, है ना, मतलब कि i+1 और j, क्योंकि ये i+1 है और j+1 है तो इसके पीछे वाला j हो जाएगा, प्लस सम i एंड j+1 ऊपर वाले का, प्लस सॉरी माइनस, अब ये डुप्लीकेट हो रहा है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस सम i j प्लस इसकी खुद की वैल्यू, तो मैट्रिक्स i एंड j, दैट्स ऑल। अब फ़ायदा क्या हुआ n+1 m+1 करने से, हमें ये नहीं चेक करना पड़ा कि ये लास्ट कॉर्नर एलिमेंट है तो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे के इफ़ एल्स बहुत सारे हो जाते। अब हम को इफ़ एल्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे एलिमेंट्स ही स्टोर कर रहे हैं, एक नेक्स्ट क्वार्टर में स्टोर कर रहे हैं, तो दिस शुड बी फाइन। अब हमने सम सारे स्टोर कर लिए, अब इसके बाद सम ऑफ रीजन निकालना है, तो सम ऑफ रीजन हम सिंपली कर सकते हैं, जैसे किसी भी रो में अब हम सिंपली अगर इसका सम निकालना है तो हमें इस डब्बे का ग्रीन वाले का निकालना है, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा और ये माइनस करने में, तो ये एलिमेंट क्या होगा, पहले तो इस पूरे का टोटल क्या होगा, ये कॉर्नर जो दे रखा है +1 में स्टोर्ड है ना, तो रिटर्न हमारा सम में रो 2 कॉर्नर वाला +1 एंड कॉलम 2 +1, ये हो गया इस पूरे का। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो और ये माइनस करना है, तो ये क्या होगा, रो टू 0
row 2 and 1 second. इस केस में क्या होगा, ये वाली वैल्यू, इस ब्लू वाले डब्बे के केस में ये वैल्यू, ये 2 है, ये वैल्यू है ये दे रखा है ना हमें, ये दे रखा है रो 1 एंड कॉलम 1, तो ये हो जाएगा हमारा ये वैल्यू हो जाएगी में रो -1 एंड कॉलम 2 एंड रो -1। तो माइनस करेंगे सम रो -1 एंड कॉलम 2, बट वी नो दैट जो सम है, सम वाले टेबल में तो ये एक एक्स्ट्रा वाले में स्टोर्ड है, एक नेक्स्ट रो में, तो रो -1 +1 हो जाएगा, तो ये रो बन जाएगा और ये कॉलम 2 +1 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी साइड का हम कर देंगे, तो वो ये रो 1 है, रो 1। सिमिलरली दूसरी साइड का हम कर देंगे तो वो बन जाएगा रो 2, इसके अंदर रो 2 +1, राइट, एंड कॉलम 1। अब ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, बट इसमें से हमें ये ऐड भी करना है क्योंकि ये 2 बार माइनस हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस सम, और ये वैल्यू हो जाएगी रो 1 एंड कॉलम 1। इसके बेसिकली रो 1 एंड कॉलम, रो 1 -1 एंड कॉलम 1 -1, बट सम वाले टेबल में तो नेक्स्ट पे है तो +1 हो जाएगा, विच इज़ रो 1 एंड कॉलम 1 and that's all I think. Let me try it out. Okay, I'll submit it. Wow. Okay, we are done with prefix sum questions. Tomorrow we'll do this sliding window.